Hello everyone there, welcome back. I am Shweta and today we are going to do revision of all the three chapters which are going to come in your unit test. We are going to revise it by practicing the exercise part given at the end of each chapter. So let's begin. Chapter first. So first we are going to see the chapter first exercise. So in the exercise part, the first part which comes is fill in the blanks. This is the chapter first exercise, fill in the blanks. First question, the dash element is a string element in an HTML. It indicates that document type definition being used by the document. So see here, which is the steering element, means वो हमेशा से देखते हैं ऐसा लगेगा हम लोग को, सबसे पहले वो आता है ऐसा लगता है वो हम लोग को स्टेयर कर रहा है, and it is showing us that yes, it is a document type. Remember that this is a document type HTML. So which is that element? Yes, at the beginning what we are writing? We are writing what? Doc type, right? Exclamation doc type. So this is the answer for this question. Okay, see if the question is asked which is the root tag of the HTML, then root if it is asked, or the parent if it is asked, then you have to write HTML tag. Okay, tags within is greater and less sign, in between that you have to write HTML. अगर आपको root tag पूछा या फिर parent tag पूछा HTML document का, that time the answer will be HTML. लेकिन अगर steering element यानी हमेशा देखते रहता है और document type, see the answer is here itself. It indicates that the document type, that is doc type. Okay, so this is the answer. Next one, the dash is a tag in HTML that describe some aspects of contents of a web page. Now see how you will come to know that to the other. Means if anybody wants to search your web page, if you are creating any website, and if some people or some users want to search your web page, and then how they can search your web page, by using which tag they can search your web page. Yes, if you are writing details or description of your website in meta tag, अगर आपने meta tag में लिखा description आपकी website का, तो users अगर कुछ भी search करेंगे तो आपने जो meta tag में लिखा रहेगा वो उसमें दिखाई देगा. Okay, users को. Okay, so how we are going to describe some aspects? By using meta tag. Now the next question is very easy. This you know. The OL tag defines an O stands for ordered and L stands for list. So the answer is ordered list. An unordered list created using the dash tag. So unordered list is created by using what? Which tag? If ordered list is created by using OL tag, then unordered list will be created by using which tag? Yes, UL tag. The dash element creates an inline frame. See which element or which tag is creating an inline frame? Yes, from inline you are going to take I, and from frame you are going to write frame. So iframe is the answer. Iframe tag is used for creating inline frames. So iframes are also called as what? Floating frames. Why? Because they can be placed anywhere on the screen. That's why. Then dash tag is used to specify video on an HTML document. So if you want to place video on the HTML document, then which tag you're using? Yes, you're using video tag itself. So the answer is video. If a web developer wants to add the description to an image, he must use dash attribute of image tag. Now, you know, if you're using source in front of image attribute, then that source is what? That is the location of the picture. ओके जो भी पिक्चर आपको पेस्ट करना है वो हम लोग सोर्स में डालने वाले, लेकिन उन्होंने वैसा कहा है क्या? नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर मुझे इमेज के बारे में कुछ लिखना है तो मैं कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर सकते, तो हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर सकते, कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम लोग? इमेज के बारे में कुछ लिखना रहेगा तो आल्ट में हम लोग इमेज के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं. ओके, सो द आंसर इज ALT, that is alternate text. The dash property is used to set position for an element. Position
पोजीशन किसके लिए होता है, आपने देखा रहेगा एलिमेंट को कहाँ पे रखना है, एब्सोल्यूट पोजीशन, रिलेटिव पोजीशंस, ऑल दिस पोजीशंस वी आर सीन। तो हम लोगों ने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया था उसके लिए, यस वी आर यूज पोजीशन प्रॉपर्टी इटसेल्फ। The float property defines the dash of content. So float property is defining the what? Float means what? Flow of content. So float property क्या define करने वाला है, content का flow कैसा है। Dash is used with elements that overlap with each other. So which is used with the elements that is overlapping with each other, जो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, ऐसा कौन सा पोजीशन था, यस एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन में हम लोग क्या देते हैं, सिर्फ लिखते हैं कि कौन से इसमें पोजीशन में आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा कि कभी कभी वो ओवरलैप भी हो सकता है। रिलेटिव पोजीशन अगर यूज करेंगे तो ओवरलैप होगा क्या, नहीं, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन कैसे रहता है, पहले टेक्स्ट से रिलेटेड वो प्लेस करता है दूसरा टेक्स्ट, जहां पे हम लोग पोजीशन यूज करने वाले होते हैं रिलेटिव के लिए। लेकिन एब्सोल्यूट पोजीशन में ऐसा नहीं होता है, जहां पे भी हम लोगों ने लिखा है एब्सोल्यूट, वहां पे ऑलरेडी अगर कोई टेक्स्ट रहेगा तो उसके ऊपर दूसरा टेक्स्ट आ सकता है। दैट इज आंसर इज एब्सोल्यूट पोजीशन। Okay, now let's move further. Let us see the next part. Question is, state whether the following statement is true or false. So the first question is, HTML is an object oriented programming language. Yes, in HTML do we use any object, are we using any object? No, that's why HTML is not an object oriented programming language, therefore the answer will be false. Next question, charset is used for character encoding declaration. Yes, for character encoding we are using charset, so the answer is true. Next question, an unordered list can be numerical or alphabetical. So if unordered list, what is unordered list, means which is not in order. If it is not in order, then can we use numbers, that is 1 2 3 4, or alphabets, that is ABCD? No, so the answer will be false. Next question, multi-level list can be created in HTML5. Yes, we can create multi-level list, means we can create nested as well as multi-level, means अगर मैंने एक लिस्ट 1 2 3 का 4 का बनाया तो दूसरा लिस्ट में ABCD का बना सकती हूँ, इसी तरह से मैं अनऑर्डर्ड का भी लिस्ट बना सकते हैं एक ही इसके अंदर। ओके, इन वन HTML document we can create many levels, that is unordered and ordered together in one page. Okay, so the answer will be true. Next question, source code specifies the HTML content of the page to show in the iframe. Yes, in the iframe we are using source code for what purpose? For showing the content of the page which should be displayed in the iframe. That's why answer is true. Next question, the controls attribute is not used. See, read the question properly, whether it is used or not used. Not used to add play, pause and volume button. So is this answer correct? No, because control तो use ही होता है उसके लिए कि प्ले, पॉज एंड वॉल्यूम का बटन हमको दिखना चाहिए। कंट्रोल्स हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को ये तीनों बटन्स दिखने चाहिए, उसीलिए लिखते हैं। अगर नॉट यूज आएगा तो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, CS इज द एक्सटेंशन ऑफ CSS फाइल। क्या CS एक्सटेंशन है CSS फाइल का? नहीं, क्या एक्सटेंशन आना चाहिए था? .CSS, यहाँ पे सिंगल एस है, सो इट इज रॉन्ग, सो आंसर इज फॉल्स। Okay, now let us move on further to see the next question. Next question is, choose single correct answer from the given options. So you have to write any one option only. Dash element used to create a linking image. See, when the question is asked for linking image, so which attribute is used from this, or which element is used? Map is used for linking image? No. TD is used? No. IMG, that is image. We are using IMG for creating or displaying the image. But we are using this IMG for linking image? No. If you want to link the image, we are going to use useMap. Because in useMap, we are going to write the name of the map file name, where we are going to link this image with the map file. Okay, that's why the element which is used is useMap. Okay, so the answer is what? useMap. Next question, the dash tag is used to embed audio files on web pages. So which tag we are going to use for audio files?
अगर हमें वेब पेज में ऑडियो चाहिए यानी गाना सुनना है तो हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं? साउंड यूज करते हैं क्या? नहीं, हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑडियो। वीडियो तो पिक्चर देखने के लिए होता है, सो वीडियो इज नॉट द आंसर, सिर्फ ऑडियो इज द आंसर। सो द आंसर इज ऑडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a programmer wants to define range for age between 18 to 50. He will use a form with the following appropriate control. अगर मुझे रेंज बताना है तो मुझे कौन सा कंट्रोल यूज करना पड़ेगा? इसमें से नंबर यूज करना पड़ता है क्या? नहीं, नंबर किसके लिए होता है? अगर आपको नंबर लिखना है सिर्फ तो कंपेयर मीन्स कंपेयरिंग। रेंज, yes, this is the right option. Okay, so the answer is range. Okay. Next question, the dash character is used to create ID in CSS. अगर मुझे ID क्रिएट करना है तो मुझे कौन सा कैरेक्टर यूज करना पड़ता है? यस, हैश यूज करना पड़ता है। और अगर क्लास यूज करना है तो डॉट। ओके, यहाँ पे डॉट नहीं दी है कंफ्यूजन के लिए, लेकिन डॉट है फॉर क्लास एंड ID इज फॉर हैश। ओके, हैश इज फॉर ID, सॉरी, आंसर इज हैश। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, choose two correct answers from the given options. Now you want to write two correct answers. First question is, list within another list, either dash list or dash list is called nested list. किसको nested list बोलने वाले हम लोग? अगर ordered के अंदर unordered लिखा है और या फिर unordered के अंदर ordered लिखा है तो उसे हम लोग nested list कहते हैं. Okay, so the answer is ordered and unordered. So the answer will be B and C, that is ordered and unordered. The answer. Next question, image maps are of two types, dash and dash. Image maps, which type? Yes, client side image mapping and server side image mapping. So the answer is B and D, that is client side and server side. Next question, a CSS rule set contains dash and dash. CSS rule में दो parts होते हैं CSS के, कौन सा है? Selector and declaration. So the answer is B and D. Selector में क्या होता है? We are writing in selector part, we are always writing the any HTML tag for which you want to give decoration. Okay, and in the declaration part you are going to write the property and value. That means what type of a decoration you want to give to the tag. Like if you want to give color red, then you are going to write color colon red. If you want to give border double, then you are going to write border colon double. So that is a declaration part. Okay, so the correct answer of this is what? B and D, that is selector and declaration. Next question, client side image map can be created using two elements, dash and dash. Now see, if you want to create client side image map, two elements are very important for this. Which are they? See, your answer is, option is area, image, use map, map and server. See, this server is of no use. This is not the answer. And this image is also of no use because we are not going to use this such type of a tag in image mapping. So B and E, we are going to skip these options. Okay, now remaining is A, C and D. Then you might get confused at which answer is correct answer. Okay, so the correct answer will be which one? Map and area. Why not use map? See, use map, it is used for linking purposes. When you want to link image with the map, that time you are using use map. Okay, अगर जब आपको client side image map में image और mapping area को link करना है, that time we are using this map, use map. Okay, so the two main elements are map. Map is what? We are using this as a container tag. Okay, and this will be used for what purpose? For declaring the areas. Okay, and area is the tag in which we are going to use what? We are going to use this tag for clicking the images. Okay, we are going to use this what? In area we are going to create the clickable areas. इसीलिए दो important parts client side में कौन से होने वाले? Map and area, but not use map. Use map कभी होता है जब दोनों को link करना है, किसको? Image और map file को. That time we are using use map. So the correct answer of fourth is A, area, and D, map. Okay, so this is all for this question. Now let's move further. Okay,
The next question is you want to select 3 correct options. So the first question is attributes of area tag. So what are the 3 correct answers from the given options? First is HRF, second is SRC. So see, HRF and SRC, both of them are used for giving the location of the file. Okay, हम लोग ये HRF और SRC दोनों इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, जो भी फाइल आपको ओपन करना है उसका लोकेशन यहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं. बट एरिया के साथ में कौन सा लिखते हैं हम लोग? Yes, if you're remembering, we are writing HRF, not SRC. Okay, so the first option is correct. Then chords, yes, we are using chords also attribute with area, because in this chords we are going to give coordinates of the given shape. Okay, data, no, data is the wrong answer. Alt, yes, we are going to give the alternate text also in the area tag. Use map is the wrong answer. Use map is the attribute of which one? It is an attribute of image tag. So the correct answer is href, chords and alt. Next question, attributes used with iframe. With iframe, which attributes you are using? Source doc. Yes, we are using source doc. This source doc is used to link the whole HTML document with the frame. Then name, yes, we are going to give the name to the iframe with the help of name attribute. ATT, no, such type of attribute is not used. SRC, yes, we are using SRC attribute with iframe to give the name, to display whatever you want to display inside the frame. That document name you are going to write in SRC. HREF, no. If SRC is used, then HRF is not used. So this is not the correct answer, and F is also not the correct answer. So the correct options or correct attributes of iframe are source doc, name and source. Next question. Following are the form controls. So which are the form controls? Email, search, label, video, tell, audio. See, video and audio, this both are wrong options. Okay, they are not the controls or in the form used. So we can directly cut this, or we can say we can eliminate these options. So email, yes, for searching the for writing the email ID, we are using email as a form controller. Then search, yes, for searching any website we are using search control. Label, no, this label is not used as a control of the form. Then tell, yes, for writing a telephone number we are using tell as a control. Okay, so the correct answer is email, search and tell. Next question, attributes with audio tag. Audio tag, with the audio tag we are going to use autoplay, yes. To play the song automatically we are going to use autoplay. HREF, no. In audio tag we are using SRC, not HREF. So this is not the answer. Controls, yes. Control is used to display play, pause and volume button. So this is the correct answer. Control, no. This control is not used. This control is used. So this is the wrong option. Loop, yes, we are using loop for playing. In loop we are displaying the number of times we want to listen to the song. So loop is the correct option. BG sound, no, this option is not correct. For audio, we are not going to, for this tag we are not using BG sound, but in the previous version of HTML, for playing song we used to use this BG sound, but it is not the attribute of audio. Okay, so the correct answer is autoplay, controls and loop. Next question, CSS types are dash and dash. Only 2 dash are shown over here, but the correct answer means you want to write 3 answers. CSS type kitne types hote CSS mein? 3 types. Which are they? Inline, internal and external. So the correct answer is A, internal, B, external and D, inline. Let us move towards the next question. Next question is positioning types in CSS are. So different types of positions are used in CSS. Which are they? Static, fixed, absolute, relative. Okay, so 4 types are there, but from this 4 types only 3 are given over here. First 3 are the correct answers. Next question, types of floating properties are. So which are the 3 different types of floating properties used? Left, right and 0. So see, this first 3 is the correct answer. Okay, moving towards the next question, that is which question is used. Next question is match the pair. Now this is A and this is B side. Now tell me, you will
From this, which we are going to use? Is it client-side image map? No. CSS property? No. Bulleted list? Yes. UL is bulleted list, right? It is bulleted list now. Bullets are given like dot, circle, disk, square. So it is correct answer. Okay. Use map. Next is use map. Use map for what purpose you are using? Client-side image map. Then color. Color is the CSS property. IMG. Now see, from this both options you might get confused. IMG, image has a submit button, inserts an image. Which is the correct answer? Yes. IMG image insert करने के लिए यूज करते हैं. Submit button के लिए हम लोग input type में लिखते हैं. Okay. So IMG is used for inserting an image and input type is equal to image. This will be used for image as a submit button. Okay. Thus we finish the exercise of first chapter. Now we are going to see the exercise of fourth chapter. So the first exercises which we are going to see of this chapter is fill in the blanks. E-commerce scope is dash. So e-commerce का scope कैसे होता है? पूरी दुनिया भर में होता है, तो ये क्या होगा? ग्लोबल होगा. और ट्रेडिशनल कॉमर्स का स्कोप लोकल, वो सिर्फ उतने एरिया तक ही रहता है. सो ट्रेडिशनल कॉमर्स स्कोप इज लोकल एंड ई कॉमर्स स्कोप इज ग्लोबल. Next question. A customer can do shopping dash online using the type of dash, by using the type of e-commerce. Now here the question has been written wrong. Actually the question कैसे होना चाहिए था कि कौन ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए कौन सा टाइप का e-commerce का यूज होता है ऑनलाइन शॉपिंग. When customer is doing online shopping, then which type of e-commerce we are going to use? We are seeing different types of e-commerce like B2B, B2C, C2C. ओके. सो वहां पे जो सबसे जहां पे कस्टमर ऑनलाइन बाय करता है वो कौन सा रहता है टाइप? यस, इट इज B2C. यहाँ पे प्रोडक्ट बिजनेस वाला बेचता है और कस्टमर उसको खरीदता है. सो द टाइप विल बी B2C. दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर. ओके. नेक्स्ट, द डैश फेज कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिलीवरी. कौन से फेज में हम लोग ऑर्डर और डिलीवरी करते हैं? कितने फेसेस होते हैं? 4 फेसेस. विच आर दे? प्री सेल. प्री सेल में कौन से आएंगे? कौन से फेसेस रहते हैं? प्री सेल. प्री सेल इज द फर्स्ट फेज. वहां पे क्या होता है? देयर बी सर्च एंड नेगोशिएट. हम लोग प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और फिर हम लोग बार्गेनिंग यानी हम लोग देखते हैं कि कौन सा वाला सस्ता है. सो दैट इज सर्च एंड नेगोशिएट कम्स इन फर्स्ट फेज, दैट इज अ प्री सेल. देन सेकंड फेज इज execution. In execution what we do? We do order and delivery of the product. Okay. Then next is the settlement, where you are going to pay the bill, that is invoice and payment. And last is after sale, means once the product has been sold, then if it is in warranty guarantee, then you are going to give the services to that product. So the first phase यहाँ पे आएगा क्या? नहीं. ऑर्डर और डिलीवरी कौन से फेज में हो रहा है? सेकंड फेज में. दैट इज विच फेज? एक्सिक्यूशन फेज. ओके. सो द आंसर इज एक्सिक्यूशन. E-wallet is a type of dash account in which a user can store his or her money for any future online transaction. कौन से टाइप का होता है? अकाउंट होता है ये जहाँ पे हम लोग बाद में उसको यूज कर सकते हैं. मोबाइल में हम लोग पैसा डालते हैं तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं? प्रीपेड अकाउंट. ओके. सो यहाँ पे कौन सा अकाउंट होगा? प्रीपेड. पहले से हम लोग पैसा भर के रख देते हैं. ओके. फिर हम लोग को जब चाहिए हम लोग उसको यूज करेंगे. दैट इज प्रीपेड अकाउंट. EDI is dash exchange of information. What is EDI? It is किस तरह से हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वे. सो EDI is electronic exchange of information. Then the dash type of e-governance refers to the government services which enable citizens to get access to wide variety of public services. So what is this saying? That refers to the government services which enable citizen to get access. यहाँ पे गवर्नमेंट सिटीजन को सर्विस दे रही है, तो कौन से टाइप का ई गवर्नेंस आएगा? G2 what? G2C. बराबर है. कौन से टाइप्स के गवर्नेंस होते हैं? G2C, G2G, G2E. बराबर है. तो इसमें से G2C जो है वो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में रिलेशन है. तो द आंसर इज G2C. The e-governance which provides safe and secure interrelationship between domestic or foreign government is. तो यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट के बारे में है, तो कौन सा आएगा? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट.
Okay, so now let us move on towards the next question. What is that? Yes, true or false? C2C type of e-commerce deals with business and customer. So C2C में business और customer का deal है क्या? नहीं. Customer to customer का deal है. So the answer will be false. Next question. The lack of personal touch can be a disadvantage for many types of services and products in e-commerce. So अगर हम लोग उसको देखेंगे नहीं तो वो disadvantage होता है क्या? Yes, it is a true. Okay, next question. चेकिंग द बैलेंस ऑफ हॉलीडे इज एन एग्जाम्पल ऑफ G2C. हम लोग हॉलीडे देखते हैं कि कितना मेरा लीव्स बाकी है, कितना लिया, तो वो एग्जाम्पल G2C का होता है क्या? गवर्नमेंट टू सिटीजन का होता है क्या? नहीं. वो किसका एग्जाम्पल होता है? वो किसके लिए रहता है? एम्प्लॉयज के लिए. कौन से एम्प्लॉयज के लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए. तो वो कौन सा आएगा टाइप? G2E. सो दिस आंसर इज फॉल्स. Next question. E-commerce provides more options to compare and select the cheaper and better options. So हम लोग e-commerce से हम लोग बहुत सारे options compare कर सकते हैं और जो भी सस्ता और अच्छा होगा वो ले सकते हैं क्या? Yes. So the answer is true. Okay. Next. M-commerce can be used through desktop computer. M-commerce, M stands for mobile. तो मोबाइल का यूज करना है यहाँ पे, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर पे हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दिस इज M-commerce इज वायरलेस मीडिया एंड दिस इज here we are using wireless handset. Okay, and desktop is what? Your wired are used. So this answer is false. Okay, now next type of question is multiple choice question. Here you want to select any one answer, correct answer. So see the question. Invoice and payment are included in dash phase of trade cycle. Now invoice and payment, we are seeing this also. This is a third type of phase. That is which phase? Yes, it is a settlement option. Okay, so correct answer is settlement. Okay, now here I am not given anything, so I will just mark it with pen. So the third option is correct answer, settlement. Next question. License renewal is an example of dash e-governance. So the options are G2G, G2C, G2E, G2B. So जहाँ पे license renewal and all the things are related to citizens, तो वहाँ पे कौन सा option आना चाहिए था? Answer is G2C. Okay, so the correct answer is G2C. So we are going to mark this option as a correct answer. Okay, so the correct option is G2C. Okay, license renewal and all that things, these are all things provided for the citizens, general public. That's why the answer is G2C. Okay, next let us see. Okay, here you want to select any two correct answers. Encryption consists of two processes, dash and dash. So here what will be the answer? Encryption में दो कौन से processes लगते हैं? हम लोगों ने देखा था पिछले बार में ही, last lecture में. The two correct answers are encryption and decryption. Which two processes we require for encryption? Encryption and decryption. Next question. The social commerce is a subset of electronic commerce that involves social media like dash and dash. सोशल कॉमर्स सोशल मीडिया से रिलेटेड होते हैं, तो कौन से सोशल मीडिया यूज होते हैं? ये आंसर तो सबको पता होगा. कौन से सोशल मीडिया होते हैं? यस, फेसबुक एंड नेक्स्ट आंसर इंस्टाग्राम. Okay, Gmail is not social media, and WhatsApp is also not the social media. Software is also not the social media. So the correct answer is Facebook and Instagram. Okay, let us see the last question of this lesson, that is match the following. Okay, M-commerce means mobile commerce. तो कौन सा आंसर आएगा इसमें से? ओके, मोबाइल कॉमर्स है तो ई बिल पेमेंट होगा. अगर आपको नहीं आ रहा है तो पहले दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं. साइफर टेक्स्ट क्या होता है?
कोडेड फॉर्म, तो उसका आंसर ये रहेगा। ओके, ईडीआई पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज करते हैं तो पेपर का बचत होता है, इसलिए पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। होलसेलर टू रिटेलर दोनों भी बिजनेसमैन होते हैं, तो ये कौन सा आएगा, B2B। लाइसेंस रिन्यूअल सर्विसेज, लाइसेंस हम लोग कहाँ पे रिन्यू कर सकते हैं, G2C में, तो G2C होता है वो। ऑनलाइन फैसिलिटी टू एम्प्लॉयज लाइक लीव, हम लोग लीव देते हैं, ये सब फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट में के अंदर जो काम करते हैं वो एम्प्लॉयज को वो सर्विसेज मिलती है, जैसे कि G2E में आएगा ये। गवर्नमेंट एजेंसीज शेयर सेम डेटाबेस, गवर्नमेंट के बीच में सेम डेटाबेस शेयर होता है, इसलिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ई बिल पेमेंट। मोबाइल में हम लोग अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो नेचुरली पेमेंट भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑनलाइन ही करने वाले हैं। सो एम कॉमर्स का ऑप्शन क्या आएगा, ई बिल पेमेंट। साइफर टेक्स्ट कोडेड फॉर्म, साइफर का मतलब ही होता है कोडेड। ओके, ईडीआई पेपरलेस एक्सचेंज। होलसेल टू रिटेलर बिजनेस टू बिजनेस। लाइसेंस रिन्यूअल G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन। ऑनलाइन फैसिलिटी G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। Government agencies share same database G2G government to government. Okay, so thus we have completed our fourth chapter also, exercise of fourth chapter, that is e-commerce and e-governance. Now let us move towards the last chapter of today's session, which is that, yes, chapter is fifth, that is database concept. So let us see some questions regarding some, we will solve some exercises of this chapter also. So the exercise of database concept chapter, first question is fill in the blanks. First fill up. Dash is a collection of related data. So in database, we are going to collect all the related data together. So what is the answer? Database. Database is a collection of related data. Next question. Queries are used to dash information from database. Queries हम लोग क्यों use करते हैं database से information रिट्राइव करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, ओके, निकालने के लिए या फिर डिस्प्ले करने के लिए। हम लोग मोस्टली क्वेरीज हम लोग इंफॉर्मेशन जो है टेबल के अंदर रहेगा वो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग करते हैं। सो रिट्राइव मीन्स डिस्प्ले। ओके, सो द आंसर इज रिट्राइव, और वी कैन राइट डिस्प्ले ऑल्सो। Next question, the representation of data in the form is called dash printed form. Printed form में कौन सा representation होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? See you are seeing the different modules, that is tables, queries, forms, reports. So इनमें से printed form में कौन सा रहता है? Report, जो last में मिलता है. So the answer is report. Next question is true or false. First question, form is used to collect the data from the user. हम लोग फॉर्म डेटा यूजर का डेटा लेने के लिए करते हैं क्या, फॉर्म का डेटा एंट्री फॉर्म, यस, तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन्यू बार इज प्रेजेंट बिलो टाइटल बार। हाँ, हमेशा टाइटल बार पहले आता है, उसके नीचे मेन्यू बार आता है, बराबर है। पहले आपने जो भी नाम से सेव करेगा वो टाइटल में दिखाई देता है, फिर उसके नीचे आपको फाइल, एडिट, व्यू, ये सब ऑप्शंस दिखाई देते हैं। सो मेन्यू बार इज प्रेजेंट बिलो द टाइटल बार, सो द आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम्स आर कॉल्ड एज रिकॉर्ड्स। कॉलम्स को हम लोग रिकॉर्ड्स बोलते हैं क्या, नहीं, कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड्स। तो ये ऑप्शन, ये जो दिया है ये ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स, सो द आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू चूज एनी वन करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज रोज इन बेस आर कॉल्ड एज डैश। अभी मैंने बोला कॉलम्स को क्या बोलते हैं, फील्ड्स, तो रोज को क्या बोलेंगे, record. So the correct answer is record. So we'll just correct it. Okay, so record is the correct answer. Next question is file extension of bases. Base का file extension क्या होता है, ODT होता है क्या, Open Database Table है क्या, नहीं, Open Database है क्या, yes. So the correct answer is OpenDB, Open Database, that is ODB. Of bases O.ODB. Okay, now let us move on further and see the next question. So last question of this chapter is match the following. Now we will see some match the following. Okay, query.
What is query? Collect information from user. Query से हम लोग information user से collect करते हैं क्या? नहीं, हम तो information form से collect करते हैं. Collection of related data, हम related data साथ में रखते हैं, लेकिन उसे क्या कहते हैं? टेबल या फिर डेटाबेस. ओके, रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस. रिट्राइव डेटा मीन्स यस, सो रिट्राइव या डिस्प्ले करेंगे डेटा डेटाबेस से, उसे बोलते हैं क्वेरी. सो द करेक्ट आंसर इज, क्वेरी का आंसर क्या आएगा? रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस. रिपोर्ट, प्रिंटेड फॉर्म ऑफ डेटा. फॉर्म, collect information from user. Table, collection of related data. Okay, so this is all for today. Okay, so thus we have seen all the exercises of all the 3 chapters which are going to come in unit test. But remember one thing, only this questions are not going to come in exam. Now you are not having match the pairs and 3 correct, right, 3 correct options or 2 correct options in your paper. You're just going to have fill-ups, that is without options. Then you're going to have true or false, and you're going to have objectives. Choice means that is only write one single correct answer. You're going to have this 3 types of questions in your exam paper. In unit test, we are talking about unit test only. Okay, in this paper we are not going to see match the following, then we are not having 3 options and 2 options. Okay, but I have told you in the last lecture also that whenever you are writing, fill in the blanks without option, because that you have to write by yourself. So please write in any one case, either write in capital letters or either write in small letters. Okay, but don't mix up everything. Okay, so this is all for today. Now wish you all the best for your exams. So hope you will do well in your exam. Thank you for watching this video. See you in the next lecture. Till then, take care, be safe and happy learning.